हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा रोज़ क्वेश्चंस देखते हैं। बेसिकली न्यूज़ होती है, उसका क्वेश्चन क्रिएट करके आपके सामने आता है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आंसर में पूरी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो रोज़ की तरह देखते हैं। आज थोड़ा सा डिले है बट नेवर माइंड, न्यूज़ है, हम हैं तो स्टार्ट करते हैं, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिसेंटली साइंड MOU with which organization to enhance its DigiPin initiative with advanced GIS, that is Geographical Information System solution, right? So they have signed MOU with ESRI India Technology Private Limited, basically to enhance the DigiPin initiative with advanced GIS solution, making the system accurate, robust and citizen friendly. This MOU was basically signed with designated representative of both the organization, and DOP Department of Post will use ESRI India's high resolution imagery and street base maps to strengthen DigiPin portal. The agreement also enables integration of DigiPin with ESRI's India's Living Atlas portal, following or allowing wider accessibility for the global GIS community. If we talk about ESRI India, it will provide technical support to ensure seamless integration and the implementation. Coming to next, and before that, जिस बच्चे ने भी अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज़ गो टू द प्ले स्टोर एंड ऐप इंस्टॉल कर लो। ओके, चल क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में रिसीव किया है एडिशनल ऑर्डर वर्थ 644 crores since its last disclosure on 30th July of 2025. These orders contribute to which flagship government initiative aimed at सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चरिंग? देखो, सेल्फ रिलायंस जब बात हो रही है तो आत्मनिर्भर भारत आप अगर तुक्का भी लगाओगे तो सही हो सकता है ना। चलो, BL ने रिसीव किया एडिशनल ऑर्डर वर्थ 644 crores and the order cover a wide range of advanced system including the data centers, ship fire control system, tank navigation system, communication equipment, seeker, jammer, stimulators and EVMs, that is electronic voting machines, etc. The enterprise also secure project related to upgrade, spare services, reinforce its position as a trust supplier for both the defense and civilian application. New order further strengthens BL's order book and it showcases the ability to provide advanced domesticated developed solutions that support government project of Atmanirbhar Bharat. आगे चलते हैं। इंडिया become the second country after which nation in Asia Pacific region to implement the comprehensive safety framework for ground handlers, and it is Malaysia. India become the second after Malaysia. Directorate Journal of Civil Aviation, that is DGCA ने ग्रांट किया है सेफ्टी क्लियरेंस एयर इंडिया SATS Airport Service Private Limited को, and it makes the first ground handling company in the country to receive the approval, and this institute the mandate in line with International Civil Aviation Organization recommendations required ground handlers to demonstrate robust safety measures or management system, risk control, staff training programs and instruction readiness. Also, India became the second country after Malaysia in the Pacific region to implement such a comprehensive framework in the alignment with ICAO's guidelines and its commitment to strengthen safety measurement system and enhance regulatory oversight in the ground handling cooperation across the India is also a move towards that. If we talk about AISATS is a joint venture between Air India Limited and SATS Limited, leading gateway provider in Asia and established in 2008. अगर मेजर एयरपोर्ट्स देखें तो 6 हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मैंगलोर, रांची एंड त्रिवेंद्रम. दे प्रोवाइड कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज ऑल्सो. आगे चलते हैं. व्हाट वाज द थीम
ऑफ द ब्रिक्स CCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्थ केयर समिट, जो भी हाल ही में दिल्ली में हुई है। ठीक है, क्या थीम है? ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ठीक है, क्या थीम है? ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, एंड दिस मेक्स अ माइलस्टोन इंटीग्रेशन with Ayush with modern science, paving the way to global healthcare collaboration and futurity system. And the conference basically जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री प्रताप राव जाधव द्वारा प्रिसाइड की गई थी समिट। ठीक है, एंड दिस अंडरस्कोर द ग्रोइंग ग्लोबल मोमेंटम टुवर्ड्स द ब्लेंडिंग ट्रेडिशन सिस्टम एंड द मेडिसिन्स विद द मॉडर्नाइज्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने MOU साइन किया विद 25 कंट्रीज टू क्रिएट रोबस्ट फाउंडेशन for the international collaboration in the traditional medicines, and further it emphasized on the stronger intra-BRICS cooperation and harmonized framework for Ayush product, and can expand market and reduce the economic volatility that can happen, and this helps establish India as the global leader in health and wellness also. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली 21st edition of annual bilateral exercise Yudh Abhyas 25 was commenced at the Fort Wainwright in Alaska, the USA. It will represent the Indian Army from which of the following regiment? जो regiment अभी है that is मद्रास regiment, and bilateral exercise है जो scheduled है 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में, and it's an ongoing one. And Indian continent is comprised of Madras regiment. and युद्ध अभ्यास की बात करें तो एनुअल एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और US के बीच में। कब से चल रही है? 2004 से चल रही है। इट एनहांस द मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, फोकसेस ऑन काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एक्सेट्रा। कमिंग टू नेक्स्ट, रिसेंटली अभी HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI increased to 59.3 in August 25 from how much in July 25, the fastest growing pace since which year? So it is 2008 and it is from 59.1 and it got to 59.3, and according to the survey it got there, and the index recorded a reading of 58.4 in June, 57 in May and 58 in April, and this marks the fastest improvement in operating condition in 17 and a half years, with production growth accelerated to nearly 5-year high, supporting a strong demand and a better alignment of supply with orders. Higher manufacturing output and strong domestic demand fueled the surge, and with the production seeing a significant year-on-year increase of 7.7, up from 4.8 in the preceding quarter. Purchasing Managers Index जो है crucial economic indicator that is derived from the survey of business manager across approximately 400 manufacturing firms in both the manufacturing and service sector. ठीक है, coming to next, 2 September कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड सेलिब्रेट करता है कोकोनट डेवलपमेंट डे, सॉरी वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कोकोनट डे कब? 2 सितंबर को। ठीक है, with the launch of revised schemes, some schemes has been revised, and जो schemes revised हुई हैं उसमें जो सब्सिडी है under the area expansion program has been raised from how much to how much? It has been ranged from 6500 to 56,000। ठीक है, from 6500 per hectare to 56,000। ठीक है, and जो सब्सिडी है for the seeding production it has enhanced from 8 to 45 rupees, and program expansion है it aims to increase the coconut cultivation through the financial assistance for planting the new areas, right? And जो board had committed to build a climate resilient coconut economy through the revised schemes and value addition, skill development initiatives. Everything will aim and ensure the
sustainable livelihood for the millions of farmer workers who are working in the coconut kind of thing, right? And scheme also presented the Export Excellence Award at the Edulix Convention Center in Kerala. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिया जीडीपी growth forecast as per the rating agency SIL for the year 25-26, and it is 6.5. The predicted one is 6.5, and in its recent or latest report, India's export growth is expected to be drag on GDP growth in the coming quarters following the imposition of the 50% tariffs in India, that is led by the USA, and its real GDP, India's real GDP is estimated to have grown by 7.8% in April to June quarter of the financial year 25-26, surpassing 6.5% of growth rate in the same quarter in the previous year. India's nominal GDP grew at an annual rate of 8.8 during the April-June wala quarter. Coming to next, which country's team has been selected for the first time to participate in Pickleball World Cup 2025, scheduled to be held in Florida, USA from October 27 to November 2. It is India. ठीक है, इंडिया की इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन ने बेसिकली रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ पिकलबॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन टीम विल पार्टिसिपेट in the Pickleball World Cup for the first time, and this is scheduled, as we have discussed, in USA, Florida, USA, October 27 to November 2, right? More than 140 players across the country, including Delhi, Maharashtra, West Bengal, Assam, Rajasthan, Odisha, Haryana, Gujarat, they will compete. Players were selected in 3 groups: open, under 16 and plus 50. And open category की अगर हम बात करें, अमन पटेल सिंगल, मेन सिंगल में अमृता मुखर्जी, वेमेन सिंगल में धीरेन पटेल एंड सूरज देसाई, मेंस डबल में रक्षिखा रवि और सिंदूर मित्तल, वुमेन्स डबल में. अंडर 16 की अगर बात करें, ये ओपन कैटेगरी थी, ठीक है. अंडर 16 अलग है, फिर 50 प्लस अलग है. अंडर 16 में आर्या खन्ना, अनुष्का छबारिया, वीर शाह, विवान पटेल, they are the girls, and this is basically under 16 boys. And if we talk about plus 50, Suryaveer Singh, Guler, नितिन कीर्तेन मेंस डबल में, और बेला कोतवानी और सुजॉय पारेख विमेन्स डबल में, ठीक है. तो दीज आर द प्लेयर दैट आर गोइंग टू कम्पीट in Pickleball World Cup that is going to be held from October 27 to November 2nd in 2025 in Florida, USA. Okay, that was it from today's session. I hope you guys might have liked this session. पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.